Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine. In the previous lecture, we were talking about a few properties of the Fourier transforms, and in that lecture, we didn't complete our discussion on Fourier transform properties. So today, we are going to discuss a few more Fourier transform properties, and namely the properties about which we will talk about in today's lecture include differentiation, integration, convolution, and multiplication. So we will basically discuss in this lecture that if we differentiate a signal with respect to time in the time domain, what would happen to that particular signal in the Fourier domain. Similarly, if we integrate any given signal x of t, what would happen to that in the Fourier domain. And similarly, the effect of convolving two signals in the time domain, what would happen to it in the Fourier domain, and similarly the effect of multiplication in time domain and the result of it in the Fourier domain. So आज का जो लेक्चर है इन्हीं टॉपिक्स पे मुश्तमिल होगा. So let's start today's lecture. Okay, so first of all, if we have a signal x of t, which is any signal, because Fourier transform also exists for aperiodic signal. So now we are not talking about कि xt must be periodic, because वो हम चीज़ जो है वो फोरियर सीरीज़ के रिस्पेक्ट में कहते थे कि फोरियर सीरीज़ ज़ाहिर है ऐसे किसी सिग्नल की एग्जिस्ट करती है जो कि पीरियाडिक सिग्नल हो. But if you have any signal, whether it is periodic or aperiodic, it can be represented with the help of Fourier transform, and that we have already discussed. Even the periodic signals can be represented with the help of Fourier transform. So if xt is any signal in the time domain, and let's suppose its Fourier transform is some x of j omega. So if we differentiate this signal x of t with respect to time, then the effect of it would be the Fourier transform x of j omega will be simply multiplied with j omega, where omega is the frequency and j is the complex number, which is equals to -1 under root. So the effect of differentiating a signal in the time domain is same as multiplying its Fourier transform x of j omega by simply j omega. So the operation of differentiation becomes a simple multiplication by j omega in the Fourier domain, and this was just a single derivative d over dt. इसी तरह से अगर हम फॉर एग्जांपल nth डेरिवेटिव लेते हैं इस xt का, which is dn of xt over dtn, then its Fourier transform will be j omega raised to power n x of j omega. So the operation of differentiation becomes a simple multiplication operation बाय जे ओमेगा. और ये जो है वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस कौन सा डेरिवेटिव जो है, क्या फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर, nth आर्डर कौन सा डेरिवेटिव ले रहे हैं. तो अकॉर्डिंगली जो आपका x ऑफ जे ओमेगा है वो जे ओमेगा रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मसलन फॉर एग्जांपल इफ इट इज सेकंड डेरिवेटिव, इफ n is 2, so d2 xt over dt square will be equals to j omega square x of j omega. Similarly, if n is 3, so d3 xt over dt cube will be j omega cube x of j omega. And similarly, if we integrate a signal in the time domain, for example, xt was a signal which was having a Fourier transform which was x of j omega. If we integrate this signal from -infinity to some point t x of tau d tau, then this operation of integration in the time domain, this relates to a multiplication
by 1 upon j omega or a division by j omega of x of j omega. So जो आपके पास x of j omega था, which was the Fourier transform of xt, that would be multiplied with 1 upon j omega plus something which is normally a constant. जैसे आपको पता है कि अगर आप integrate करते हैं तो then you have some constant. So here that constant is pi x of 0 delta of omega. Delta of omega is the impulse function in the omega domain, in the frequency domain, and obviously its value is just exist around omega is equals to 0. X of 0 is the value of signal at that particular frequency. Omega is equals to 0, and it will also be multiplied with pi. So effect of integration in the time domain is just a multiplication by 1 upon j omega in the Fourier domain plus a constant which is pi x of 0 delta of omega. Okay, so now let's talk about another property which is very important and which we will use again and again in the examples, and the property is that कि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई LTI सिस्टम है which has an impulse response से h of t, तो आपके पास ये जो impulse response है सिस्टम का, if it is known and if you are giving input as x of t, then the output of this particular system will be x of t convolution h of t. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटपुट जो है वो कैसे आप मालूम करते हैं if you know the impulse response of the system and you know the input of to the system. So that is basically a convolution of xt and ht. So we want to see कि ये जो convolution का operation है, which this operation we are performing at the moment in the time domain. So ये Fourier की domain में जो है वो किस तरह से आपके पास होगा, ये कैसे ट्रांसलेट होगा. So we assume that xt has a Fourier transform x of j omega. Similarly, ht has a Fourier transform h of j omega. Now if I compute yt, which is a convolution of xt and ht in the time domain, so in the frequency domain what would happen, I will get this y of j omega, which is the Fourier transform of yt. So y of j omega, which is the Fourier transform of yt, is equals to x of j omega, which is Fourier transform of xt. This convolution in time domain will be transformed to a multiplication in the frequency domain, and h j omega is the Fourier transform of ht. So ये जो convolution का ऑपरेशन हम टाइम डोमेन के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में if we take x of j omega, which is Fourier transform of xt, and similarly h of j omega, which is Fourier transform of ht. So in the frequency domain, these two Fourier transforms x j omega and h j omega will simply multiply with each other to generate the Fourier transform of the output, which is y of j omega. So Fourier transform maps the convolution of two signals to the product of their Fourier transforms. So this is the product of the Fourier transform x j omega and h j omega. और ये x j omega जो है, this is the Fourier transform of xt. Similarly h j omega जो है, that is the Fourier transform of ht. So ये convolution का जो operation है in the time domain, that transforms to a multiplication operation in the Fourier domain, and h of j omega is the Fourier transform of the impulse response. ये h of j omega जो है, ये Fourier transform जो है impulse response का है, just like ht which is called the impulse response. और ये हमने पहले बात की थी कि impulse response of an LTI system completely characterizes that system, यानी उस सिस्टम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं they become known if we know ht. सिमिलरली चूँकि ये एच जे ओमेगा जो है ये भी इस एच टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो इफ़ वी नो एच ऑफ जे ओमेगा तो we also know every property about that system, क्योंकि हम h of t से h j omega जो है वो
we can obtain that h of j omega from ht by just taking the Fourier transform. So if we have h j omega, which is the Fourier transform of ht, although that is the only difference is that is in a different domain, वो Fourier domain में है h of j omega, but it also completely describes the system. जितनी भी उसकी properties हैं वो हम इस h of j omega की टर्म में भी बयान कर सकते हैं, और इनफैक्ट जब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसी एच जे ओमेगा की फॉर्म में या एच एस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये एक चीज़ हमने डिस्कस की थी टाइम डोमेन के अंदर कि इफ़ यू हैव टू LTI सिस्टम, जिसमें से किसी एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस से h1 ऑफ t है, दूसरे सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस h2 ऑफ t है, और अगर वो सिस्टम सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो ये फॉर एग्जांपल h1t है, ये h2t है, तो आप उन दो सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ सिंगल सिस्टम, और उस सिंगल सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस जो होगा दैट वुड बी द कन्वोल्यूशन ऑफ देयर इंडिविजुअल इम्पल्स रिस्पांसेस. यानी ये जो आपके पास रिजल्टेंट सिस्टम है, इस रिजल्टेंट सिस्टम का टाइम डोमेन के अंदर इम्पल्स रिस्पांस जो होगा दैट विल बी h1 ऑफ t कन्वोल्यूशन h2 ऑफ t. एंड इन द फोरियर डोमेन h1t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज h1 j ओमेगा, सिमिलरली h2t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज h2 j ऑफ ओमेगा. सो देयर रिजल्टेंट ट्रांसफर फंक्शन, देयर रिजल्टेंट सिस्टम which is equals to the cascade of these two systems, that system will have a frequency response which will be just a multiplication of h1 j omega h2 j omega, क्योंकि आपके पास जो फोरियर डोमेन है उसमें कन्वोल्यूशन जो है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिंपल मल्टीप्लिकेशन. मोर ओवर ये भी हमने बात की थी कि इन सिस्टम का आर्डर जो है ये भी रिवर्स किया जा सकता है. ठीक है, सो h2 j ओमेगा कैन बी कनेक्टेड बिफोर h1 ऑफ j ओमेगा. सो अगर आप आर्डर रिवर्स कर दें तो उससे भी ओवरऑल आउटपुट पे या इनपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो थोड़ा सा हम अब इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके पास चूँकि h ऑफ j ओमेगा विच इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पांस, हम उसकी बार बार बात कर रहे हैं, तो क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो तमाम सिस्टम्स का एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता. सो कन्वर्जेंस, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन ऑफ कन्वर्जेंस. सो क्वेश्चन इज़ दिस कि is it possible that all LTI systems have a Fourier transform which converges? So the answer to this question is obviously no. ठीक है, हर सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस है या जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आंसर जो है वो फिनाइट आए. सो इस पे भी कन्वर्जेंस की वही कंडीशंस अप्लाई होंगी जो हम पहले xt के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये भी एक सिग्नल है. इम्पल्स रिस्पांस भी जस्ट लाइक अ सिग्नल. सो ये सिग्नल जो इम्पल्स रिस्पांस है आपके पास, ये कन्वर्ज करेगा या कन्वर्ज नहीं करेगा. सो if to answer that question, the impulse response needs to satisfy three conditions which are called Dirichlet conditions. ठीक है, उनमें से पहली कंडीशन ये है कि जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इम्पल्स रिस्पांस है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हेन इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. सो दिस कंडीशन इज नोन एज एब्सोल्यूट integrability. So a system is stable or its Fourier transform exists if it satisfies this first Dirichlet condition. In fact, if it satisfies all three Dirichlet conditions, only then its Fourier transform will exist. But the most important of these three conditions is the first condition, which is this, that the absolute value of impulse response must be less than infinity when integrated from minus infinity to plus infinity. The other two conditions are normally
satisfied by all physical and those signals which have a practical significance। वो conditions क्या हैं वो हम already discuss कर चुके हैं। एक condition ये है कि impulse response या जो भी आपके पास signal है जिसका Fourier transform calculate कर रहे हैं, that must have finite number of minima and maxima। और एक और कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि जिस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, it must have finite number of discontinuities in one period t, या अगर फॉर एग्जांपल ये डिस्क्रीट है तो इन दैट केस n। सो ये कंडीशंस दो जो कंडीशन 2 और कंडीशन 3 हैं, दे आर आल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोस्ट systems or most signals satisfy these conditions when we are talking about the impulse response। However, the first condition, that the absolute value of impulse response must be less than equals to infinity, or the system which has this impulse response h of t must be absolutely integrable। If this is satisfied, then we say that Fourier transform exists, or we say that the system is stable। please remember कि stability की हमने condition एक देखी थी in terms of impulse response, और वो exactly यही condition थी कि absolute value of impulse response when integrated from minus infinity to plus infinity must be less than infinity। so that is the same condition जो स्टेबिलिटी की है, और यही कंडीशन बेसिकली आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म के एग्जिस्ट करने की भी है। सो किसी भी सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब वो इम्पल्स रिस्पांस जो सिस्टम का करेक्टरिस्टिक है, इम्पल्स रिस्पांस इज प्योरली अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। सो वो इम्पल्स रिस्पांस जो सिस्टम का करेक्टरिस्टिक है, इफ दैट इम्पल्स रिस्पांस इज एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल, तो ओनली देन इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल एग्जिस्ट, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ओनली देन द सिस्टम विल बी स्टेबल। सो it is possible that we may have some stable systems and some unstable systems। ठीक है, सो हमारे पास दोनों किस्म के सिस्टम्स जो हैं वो हो सकते हैं। किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस अगर एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल है तो देन इट वुड बी स्टेबल, और अगर वो एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल नहीं है तो देन इट वुड नॉट बी स्टेबल। सो स्टेबल एलटीआई सिस्टम को एनालाइज करने के लिए वी विल यूज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या कन्वर्ज करेगा। एंड इफ द सिस्टम्स आर अनस्टेबल LTI but they are unstable, so for their analysis we will use the Laplace transform, which is our next topic or next chapter जो हमने इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद डिस्कस करना है। सो स्टेबल LTI सिस्टम्स अगर होंगे तो उनके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का टूल यूज़ करेंगे फॉर देयर एनालिसिस, और अगर वो अनस्टेबल हैं तो वी विल यूज़ Laplace transform फॉर देयर एनालिसिस। Okay, so let's now take a simple example in which we will find the Fourier transform, and then we will discuss of the impulse response, which is basically called the frequency response of the system, and then we will discuss the two of its components. One of them is called magnitude response and another one is called phase response. So let's suppose we have a system whose impulse response is defined like this. Impulse response is delta of t minus t naught. This type of system is called a pure time shift, क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस, रिमेंबर दैट इम्पल्स रिस्पांस क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम को डेल्टा टी इम्पल्स फंक्शन इनपुट के तौर पे देते हैं तो वट एवर आउटपुट इट प्रोड्यूसेस, दैट आउटपुट इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पांस। सो इस सिस्टम को जब आपने डेल्टा टी इम्पल्स फंक्शन इनपुट के तौर पे दिया तो output the system produced is delta of t minus t naught. So what this system has done, it has simply shifted the impulse function to some other index t naught। यानी हो सकता है कि आप के पास ये t naught जो है वो अगर 3 है तो इसका मतलब है कि वो इम्पल्स फंक्शन जो आपने इसको t is equals to 0 पे दी थी आउटपुट पे, दैट इम्पल्स फंक्शन will appear at t is equals to 3 because its impulse response is delta of t minus 3। तो इसने 3 यूनिट्स उस इम्पल्स फंक्शन को डिले कर दिया है। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अ प्योर टाइम शिफ्ट।
तो इसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि जिस भी सिग्नल का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना होता है तो आप उस सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं विद ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी, and you integrate that from minus infinity to plus infinity. Since our ht was equals to delta of t minus t naught, so we will multiply these two functions, delta of t minus t naught and e raised to power minus j omega t dt, and we integrate from minus infinity to plus infinity. But delta of t minus t naught only exists at a single point which is at t is equals to t naught. So बाकी ये हर जगह पे ज़ीरो है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है. सो इसका मतलब ये है कि जब ये सिग्नल से मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि ये वाला फंक्शन हर पॉइंट पे ज़ीरो है सिवाय एक पॉइंट के, तो ये वाला सिग्नल भी सिर्फ उसी पॉइंट पे सरवाइव करेगा. सो दिस इज़ ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी नॉट. ठीक है. सो यहाँ पे भी आपके पास ये सिर्फ उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे आपके पास ये फंक्शन जो है ये नॉन ज़ीरो था. तो उसी पॉइंट पे सिर्फ ये नॉन ज़ीरो होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स पे ज़ीरो होगा. नाउ दिस इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, एंड दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, as we discussed in the previous lecture, has two components. One component is called the magnitude response, the other component is called the phase response of the system. So its magnitude response is, हम e raised to power minus j omega t naught को जो है वो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी मालूम करेंगे. e raised to power minus j omega t naught is cosine omega टी नाट माइनस जे साइन ओमेगा टी नाट. सो जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो दैट विल बी कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ 1. सो इट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो 1 है, बट इट्स फेज रिस्पांस इज़ माइनस. The phase response is tangent inverse of imaginary part over real part. Its imaginary part is minus sine omega t naught, its real part is cosine omega t naught, so that is tangent inverse of minus tan omega t naught, so that will be simply equals to minus omega t naught. So ये इसका phase response जो है that is a linear function of frequency and its magnitude response is just 1. so इसका मतलब ये होगा कि किसी भी सिग्नल को जब आप इस तरह के सिस्टम से पास करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड रिस्पांस में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ उसका जो फेज़ रिस्पांस है वो चेंज हो जाएगा. और वो फेज़ रिस्पांस जो है वो बेसिकली वो भी लीनियरली डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे, तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली उसकी लीनियरली वेरी करेगा. तो अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है इफ़ दिस इज़ दिस, तो किसी भी सिग्नल के लिए इसकी आउटपुट जो y ऑफ जे ओमेगा होगी दैट विल बी x ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाइड विद h ऑफ जे ओमेगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि y ऑफ जे ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू x ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाइड विद h ऑफ जे ओमेगा. सो दिस इज e रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इनटू x ऑफ जे ओमेगा. फॉर एनी किसी भी सिग्नल के लिए जब आपने आउटपुट मालूम करनी होगी तो यू विल फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड यू विल मल्टीप्लाई दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म विद ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट. Another example, and this is again a very simple example, कि let's suppose हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी आउटपुट और इनपुट जो है वो इस तरह से आपस में रिलेटेड हैं कि y ऑफ t इज़ डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t. जो भी आपके पास इनपुट सिग्नल आप इस सिस्टम को देंगे आउटपुट पे यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट सिग्नल. सो अगर हमारे पास y ऑफ t जो है वो d बाई डी टी ऑफ एक्स टी हो, तो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करें अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी विच वी हैव जस्ट डिस्कस, सो y ऑफ जे ओमेगा विल बी जे ओमेगा x ऑफ जे ओमेगा. सो ये y ऑफ जे ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल्स टू h ऑफ जे ओमेगा इनटू x ऑफ जे ओमेगा. सो इसका मतलब है वट एवर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद x ऑफ जे ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू h ऑफ जे ओमेगा. सो h ऑफ जे ओमेगा in this case is simply equals to j omega. The frequency response for this system which is a differentiator का
मतलब क्या है कि जो भी आप इसको इनपुट के तौर पे देंगे, आउटपुट पे इट वुड सिंपली डिफरेंशिएट दैट सिग्नल. सो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ अ डिफरेंशिएटर इज जस्ट equals to j omega, where omega is the frequency and j is the complex number, which I have already told you. Okay, now another property, the last property for today's lecture which we will discuss is called multiplication property. ये हमने डिस्कस किया है कि अगर आप दो सिग्नल्स को टाइम डोमेन के अंदर कन्वॉल्व करें, यानी उनकी कन्वोल्यूशन लें, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई टू सिग्नल्स इन द टाइम डोमेन. अगर हम टाइम डोमेन के अंदर दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है. ठीक है, सो ये जो दो डोमेन्स हैं, टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो जैसे कि हमने देखा कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन. सो सिमिलरली वी expect that multiplication in time domain is a convolution in frequency domain. और अगर आपके पास RT कोई सिग्नल है जिस which is equals to product of two signal, one signal is ST, other signal is PT, तो RT जो है that is product of two signals in the time domain. तो अगर हम इस RT का Fourier transform लें R of j omega, so that would be a convolution of these two, of convolution of the Fourier transform of these two signal. ST का जो Fourier transform है, that let's call that as SJ theta, और PT का जो Fourier transform है, let us call that as P of j omega minus theta. So this is exactly similar concept which we discussed which we discuss in the time domain, और जिसको हमने कन्वोल्यूशन कहा था. प्लीज़ रिमेंबर कि कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में किसकी इक्वल होती है, x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, और इसी तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं उसको. यहाँ पे जो 1/2 पाई का फैक्टर आ रहा है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अंदर मौजूद है. रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर. इनमें से एक सिग्नल जो है यू हैव टू फिक्स दैट सिग्नल, दूसरे सिग्नल को आपने जो है वो टाइम के अंदर रिवर्स करना है और उसको फिर शिफ्ट करना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. और इन दो सिग्नल्स के दरमियान आपने ओवरलैपिंग एरिया देखना है. जहाँ पे ओवरलैप होगा वहाँ पे इस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट नॉन ज़ीरो होगा, और जहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा वहाँ पे इस कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है वो ज़ीरो होगा. सो दिस इज़ अ कन्वोल्यूशन, बट this time the convolution is in the frequency domain. इससे पहले जो हम convolution देख रहे थे, जब हमने convolution का टॉपिक डिस्कस किया था, so that was the convolution in the time domain, but this convolution is in the frequency domain. लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ है कि एक सिग्नल को आपने फिक्स रखना है, दूसरे को आपने फ्लिप करना है, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड यू हैव टू नोट द ओवरलैपिंग एरिया कि कहाँ पे वो ओवरलैप कर रहे हैं. जहाँ पे ओवरलैप कर रहे होंगे वहाँ पे उसका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, और जहाँ पे वो ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो. सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है एक सिग्नल की किसी दूसरे सिग्नल के साथ टाइम डोमेन में, इसको जो है इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है. Maybe in the next semester, you are currently you are in the 4th semester, when you will go to the next semester, 5th semester inshallah. So then there you will study a course which is known as analog communication या principle of communication. और principle of communication में आप एक चीज़, एक concept पढ़ेंगे which is called amplitude modulation. amplitude modulation के अंदर यही होता है कि आप एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के साथ, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम डोमेन के अंदर. सो दैट is that this thing is known as
मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि आप जो है वो बेसिकली यू आर मॉड्यूलेटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वन सिग्नल बाय मल्टीप्लाइंग इट विद सम अदर सिग्नल। सो इस वजह से इस कंसेप्ट को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। मॉड्यूलेशन की बहुत सारी डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी है, फेज मॉड्यूलेशन भी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी है। सो बट बेसिकली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज कि जब आप किसी सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन द टाइम डोमेन, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग द, you are modulating the amplitude of one signal by multiplying it with some other signal। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम आज के इस लेक्चर में देख। सो ये एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिग्नल है s ऑफ t और इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है s ऑफ जो j ओमेगा, दैट इज शोन इन दिस फिगर। सो दिस s ऑफ j ओमेगा, this is non-zero only between two frequencies माइनस ओमेगा 1 एंड से प्लस ओमेगा 1। सो इसकी एक ही अक्रंस है इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, ये सारी फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ये दिस इज ओमेगा जो आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नॉन ज़ीरो है बिटवीन माइनस ओमेगा 1 एंड प्लस ओमेगा 1। इसके अलावा ये सिग्नल एवरीवेयर जो है वो ज़ीरो है। लेट्स सपोज कि हम इस सिग्नल को जो एक्स एस ऑफ टी था इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक सिग्नल पी ऑफ टी के साथ, एंड पी ऑफ टी इज कोसाइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, दिस पी ऑफ टी, अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ पीरियाडिक सिग्नल। ठीक है, पीरियाडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे मालूम करते हैं वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आप इस पी ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करें विच इज़ कॉल्ड पी ऑफ जे ओमेगा, सो इट हैज़ टू अकरेंसेज, इट हैज़ टू पल्सेज, two impulse functions, one at omega is equals to omega naught, another at omega is equals to minus omega naught, and the amplitude of both of them is equals to pi. So pi delta omega minus omega naught, this corresponds to this. Pi is the amplitude, delta omega minus omega naught is an impulse function in the frequency domain, and it exists at omega is equals to omega naught. Similarly, pi delta of omega plus omega naught is an impulse which exists at omega is equals to minus omega naught, and its amplitude is pi. So this is the Fourier transform of this signal। ठीक है, अब प्लीज रिमेंबर कि हमारे पास ये दो सिग्नल हैं जिनको हमने कन्वॉल्व करना है। ठीक है, यानी इस सिग्नल का और इस सिग्नल की आपने जो है वो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन जो है वो इनका आपने परफॉर्म करना है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। ये जो इनके कोरस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म है एस ऑफ जे ओमेगा और पी ऑफ जे ओमेगा, इनको आपने कन्वॉल्व करना है, या आप ये कह सकते हैं कि इसका जो टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल है एस ऑफ टी, उसको आपने पी ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लिकेशन इन द टाइम डोमेन इज सेम एज कन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। सो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या होता है आपको पता है कन्वोल्यूशन के अंदर कि आप किसी भी एक सिग्नल को जो है वो टाइम के अंदर रिवर्स करते हैं, यानी उसका इमेज लेते हैं और फिर उसको शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस पॉइंट पे इस सिग्नल का और इसका ओवरलैप होगा, देयर यू विल हैव द नॉन ज़ीरो रिजल्ट। सो इसको अगर आप कन्वॉल्व करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट you will get this signal occurrence which originally was at omega is equals to 0. Now it will be shifted at omega is equals to omega naught and at omega is equals to minus omega naught। ठीक है, सो ये सिग्नल जो कि आपके पास पहले ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे एग्जिस्ट करता था ओरिजिनली जब आपने इसको मॉड्यूलेट नहीं किया था, अब ये एग्जिस्ट करेगा at omega is equals to omega naught, and a mirror image of that will be at omega is equals to minus omega naught. Now this omega naught, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज मच हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विच वाज इक्वल्स टू 0। ये 1000 हर्ट्ज भी हो सकती है, 10,000 हर्ट्ज भी हो सकती है, ठीक है, 50,000 हर्ट्ज भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी होगा तो इस सिग्नल जो है ये उस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसमें आप एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं और उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
सो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी यहाँ पे कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड इस वजह से कम हो रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में यू हैव दिस 1/2 पाई फैक्टर। सो इसकी वजह से जब आप ये करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो है वो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 पाई एस ऑफ जे ओमेगा एंड कन्वोल्यूशन विद पी ऑफ जे ओमेगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था जो एग्जिस्ट करता था ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे। जब आपने इसको मॉड्यूलेट किया है तो इट हैज़ बीन transformed और now it occurs at some higher frequency which is omega naught। और वो डिपेंड करता है कि ओमेगा नाट आप कोसाइन के केस में, क्योंकि कोसाइन ओमेगा नाट टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि वो ओमेगा नाट आप क्या चूज़ करते हैं। जितनी वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी ये जो सिग्नल है उस फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस विल बी दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग दिस सिग्नल। ठीक है, सो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन खैर आपने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के कोर्स में भी पढ़नी है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की वो मल्टीप्लिकेशन, कन्वोल्यूशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ करेंगे, जो एंड चैप्टर पे हमारे पास प्रॉब्लम है उसके लिए भी यूज़ करेंगे। एंड दे मैनी ऑफ देम हैव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एज वेल। ठीक है, जिस तरह से ये मॉड्यूलेशन जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन which we normally do whenever we need this modulation scheme। इसी तरह से आपके पास कन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है विच सिंपली चेंजेस द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन इनटू अ multiplication operation in the Fourier domain, that is also very useful for solving certain problems। so hopefully आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्क्रीट Fourier ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।